आज हम डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। The statement of Cauchy integral formula is let fz be an analytic function. Fz be an analytic function on and inside the closed contour C on and inside the closed contour C, and let zeta be any point inside C. So then f of zeta is equal to 1 upon 2 pi I integration along a curve C f z z upon z minus zeta। ये स्टेटमेंट है। जीटा बी एनी पॉइंट विच लाई इनसाइड द कर्व सी। अब इसको प्रूव करना है। सो हाउ टू प्रूव दिस कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स नाउ। So here we consider a curve. So this is a curve C. Now we take a point zeta which lie inside the curve C and having radius r. So we write down that let us consider a function phi z, phi z equal to fz upon z minus zeta. This is equation number 1. This is the region. Now phi z is analytic. Phi z is analytic in the shaded region, or we can say the dotted region. Function is analytic in the dotted region. So let us form a closed curve C dash, which consists। अब देखिए एक और कर्व ले रहे हूं, दैट इज सी डैश। और सी डैश जो कर्व होगी, सी डैश कर्व के लिए दिस इज द कर्व सी डैश। नाउ theta be any points, the direction of this curve is this, and now direction of this. So this is the CR, that means we take inside the curve CR. Now C dash, or this is the point A, here is the point B. So we can take the curve C dash, which consists C प्लस पॉजिटिव रीजन, दैट में जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी।
Now, direction of AB. AB डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगी और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगी। एक जगह तो नेगेटिव होगी, दूसरी जगह पॉजिटिव होगी। और जो सी आर है साइड, उसकी क्या डायरेक्शन होगी? ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस विल बी ऑल्सो द नेगेटिव। So we convert that means this is C, or now here is AB, or now that is CR, or then a BA. You can say that BA. So this side will be the positive. So now by Cauchy integral theorem, so we apply here Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem says that line integral along a curve C dash fz into dz equal to 0. So D is the domain. So now तो जो सी डैश है कर्व, वो सी डैश कर्व क्या है? सी डैश कैन बी रिटन एज सी डैश डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, दैट मीन वन इज सी और सेकंड पोर्शन इज ए बी, नाउ थर्ड इज बी ए और ए बी माइनस, और फोर्थ वन इज सी आर और एफ जेड वी कंसिडर एज वाई जेड और इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0. So fz we consider as phi z. So directly you can write down in place of fz as phi z, because we have considered the function as phi z. So you have considered as phi z here. Okay. So now this to this will cancelled. So here we have a c along a curve c, function of phi z into dz, or this is the negative sign. So this can be equal to cr phi z into dz. Cr means so inside जो है कंट्यूब के लिए. Now, so what is the value of phi z? So we put the value of phi z. Phi z value is fz upon z minus zeta into dz is equal to cr, or here also fz upon z minus zeta into dz. Now, for the arc cr or curve cr, so we write down as cr. So this can be written as fz minus f zeta और प्लस एफ जीटा, जीटा ऐड किया, जीटा सब्ट्रैक्ट किया अपॉन जेड माइनस जीटा इंटू डी जेड. सो दिस वी कैन राइट डाउन एज, सो दिस इक्वल टू सी आर एफ जेड माइनस एफ जीटा अपॉन जेड माइनस जीटा इंटू डी जेड और प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जीटा अपॉन जेड माइनस जीटा इंटू डी जेड. Now this can be written as CR. So we write down this as FZ minus F zeta upon Z minus zeta into DZ or plus. So we write down this as F zeta. ये तो constant होगा क्योंकि Z का function तो है नहीं. So this will be the constant we can take outside. Zeta और CR or 1 upon Z minus zeta और into DZ. अब ये Z माइनस जीटा, अब जेड माइनस जीटा, और जीटा क्या है? जीटा भी एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व सी. तो नाउ अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस जीटा इज इक्वल टू आर, तो हमने क्या लिखा है? तो आर, कोई आर रेडियस है जैसे जिसमें जीटा भी एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल सी, और वेयर आर इज द रेडियस, मॉड ऑफ जेड माइनस जीटा इक्वल टू आर. तो सर्कल दे रखा रेडियस आर का, so mod of z minus zeta equal to r. So when we write down this, to z minus zeta equal to r e raised to the power I theta. So r e raised to the power I theta. So then this can be written as z equal to
zeta plus r e raised to the power iota theta. So then what is the value of dz? The dz value will be the zeta is constant, so 0 plus iota r e raised to the power iota theta into d theta. So this can be the dz equal to iota r e raised to the power iota theta or d theta. So what is the value or limits of theta? The theta lie between 0 to 2 pi. So we are considering a circle. So we are considering a circle. So which having radius r and theta equal to 0, then theta equal to 2 pi. अब सॉल्व कर रहे हैं इस इंटीग्रल को फर्स्ट. जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट डाउन दिस एज सी आर एफ जेड माइनस f zeta upon z minus zeta into dz और प्लस f zeta और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी फंक्शन की 0 to 2 pi. So take the limit at theta equal to 0 to 2 pi and f dz value is r iota e raised to the power iota theta or d theta upon z minus zeta value is r e raised to the power iota theta. तो आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा. तो यहाँ पर आई डी थीटा रह जाएगा केवल. सो दिस कैन बी रिटन एज सी आर एफ जेड माइनस एफ जीटा अपॉन जेड माइनस जीटा इंटू डी जेड प्लस एफ जीटा और इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आयोटा इंटू डी थीटा. So we can write down this as f z minus f zeta upon z माइनस थीटा इंटू डी जेड और ये हो जाएगा प्लस आयोटा एफ जीटा और थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और थीटा के लिए जब लिमिट से अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 0. तो राइट डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 पाई. सो दिस विल बी द 2 पाई आई. सो वी कैन राइट डाउन एज सी आर एफ जेड माइनस एफ जीटा अपॉन जेड माइनस जीटा इंटू डी जेड प्लस 2 पाई आई एफ जीटा. तो एलएचएस क्या था हमारा? एलएचएस है along कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस थीटा इंटू डी जेड. So now we can write down this as along curve C f z z minus theta into dz और ये लिख दिया हमने 2 pi iota into f zeta is equal to cr integration minus f zeta upon z minus theta into dz. Okay, so taking the modulus of this, so when we take the modulus, so we write down as fz upon z minus theta into dz minus 2 pi iota f zeta is equal to integration f z minus f theta upon z minus theta into dz. So this can be written as less than equal to integration along with curve CR mod of modulus of fz minus f theta upon modulus of z minus theta or into mod of dz. So now this is less than equal to the divisor is the modulus area, that so we can take the sign less than equal to. So now this can be written as CR or we write down this as mod of dz upon z minus theta modulus of. So value this value will be by using the definition of continuous function. So mod of fz minus f theta less than epsilon. So this value will be less than epsilon. So this value will be less than
epsilon, less than epsilon. So we write down this as integration 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, or dz. When we take the modulus of dz, dz modulus will be the ऊपर हमने dz कैलकुलेट किया, ये dz क्या है हमारा r e रेस पावर आयोटा थीटा डी थीटा, आयोटा r e रेस पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो आयोटा e रेस पावर आई थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा वो r d थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है r, और r टू r कैंसिल तो d थीटा, और d थीटा दिस मींस दिस वैल्यू इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन, और 2 पाई एप्सिलॉन, और 2 पाई एप्सिलॉन कब होगी, और दिस कैन बी रिटन है दिस 2 पाई एप्सिलॉन टेंस करेगी जीरो को जब व्हेन एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। so when epsilon tends to zero, so it means that the value 2 pi iota and f zeta is equal to integration along a curve C f z dz upon z minus zeta, तो ये इक्वल हो जाएगा। So now this equal to this, so we can write down the value of f zeta is equal to 1 upon 2 pi iota integration f z dz upon z minus zeta. So this is the proof of Cauchy integral formula. This formula we will use when function fz is analytic and a be any point, a लिख लेंगे as zeta, zeta के लिए सॉल्व किया, zeta be any point which lie inside the circle C, so then f zeta equal to 1 upon 2 pi I integration along a curve C f z dz upon z minus